Welcome to our channel, guys. Plant behavior and reproduction. So today we are gonna learn about कि plant behave कैसे करते हैं and reproduce कैसे करते हैं. Introduction. Introduction to plant behavior. Plants, like all living things, have behaviors that help them to grow, survive, and reproduce. Even though they don't move like animals, plants can respond to their environment in amazing ways. तो प्लांट्स को भी जीने के लिए कुछ बिहेवियर की जरूरत है, सरवाइव, ग्रो या रिप्रोड्यूस करने के लिए उसको भी कुछ करने की जरूरत है ना. सो इवन दो वो एनिमल्स की तरह मूव नहीं कर सकते, बट वो भी एनवायरनमेंट की तरफ रिस्पॉन्ड कर सकते हैं ना, डिफरेंट वे. Trophism. Trophism means how the plants respond. So there are various kind of trophism. The first is phototrophism. फोटो का मतलब ही होता है लाइट. ओके. So this is how plants respond towards the light. Have you ever noticed how plants seems to respond towards sunlight? That's phototropism. The parts of plants that need sunlight, like the leaf, grow towards the light. तो लीफ को सनलाइट की बहुत जरूरत होती है. क्यों? टू क्रिएट फोटोसिंथेसिस, है ना. तो जो लीफ है ना, स्पेसिफिकली लीव्स है ना, दैट विल ओनली ग्रो टुवर्ड्स सनलाइट. देन आता है जियोट्रॉफिज्म. This is the way plants respond towards gravity. Now, geotrophism दो तरीके के होते हैं, positive and negative. So, roots grow downwards into the soil. That's positive geotrophism to find water and nutrients, while stem grows upwards. That's negative trophism to reach sunlight. Roots downwards की तरफ ग्रो होते हैं ताकि उनको वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स मिल सके. दैट्स पॉजिटिव. जबकि जो स्टेम होते हैं वो ऊपर की तरफ ग्रो करने लगते हैं. दैट्स नेगेटिव टू रीच सनलाइट. देन कम्स हाइमोट्रॉफिज्म. Some plants respond to touches as well. For example, vines wrap around the object they touch, which helps them to climb and get more sunlight. तो वाइन्स क्या होता है ना, जो भी ऑब्जेक्ट उसके टच में आता है, वाइन उसी के अराउंड रैप होके एकदम स्पाइरल वे में रैप होता है. एंड उस वे में क्या होता है ना कि वो क्लाइंब, क्योंकि वैसे ना, क्योंकि वो उनका जो रैप फॉर्म होता है तो वो नीचे की तरफ ही रह जाता है. तो अगर कोई चीज तुम उसमें लगा दो, कुछ स्ट्रेट चीज, तो उसमें रैप होके स्पाइरल वे में रैप होके क्लाइंब करने लग जाता है, सो दैट इट कैन रीच टुवर्ड्स सनलाइट. Plant reproduction, that means making new plants. Plants have different ways to reproduce, which means they can make new plants. There are two main methods: asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction means when a new plant grows from a part of parent plant. Like parent plant, सिर्फ एक parent plant की नीड होती है, दूसरे parent plant की नीड नहीं होती है. Like a stem or root. One common way is through cutting, where a piece of plant is planted in the soil and it grows into a new plant. For example, rose. रोज का अगर तुम बीच में से स्टेम काट दोगे और उसको दोबारा सॉइल में डाल दोगे, it will grow into a new plant. Then comes sexual reproduction, where you will need two parent plants. This involves the joining of male and female parts of a plant, of a flower, to produce seeds which can grow into a new plant. The main parts of the flower that are involved in this process are stamen and pistil. Stamen क्या होता है? This is the male part of the flower which produce pollens, and then comes pistil. This is the female part of plant which includes ovary where the seeds are formed. अब इनके रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को एक मेन जो हमारा प्रोसेस होता है, वी कॉल देम pollination. Pollination is an important part of sexual reproduction. Why? It's when pollen from the stamen reaches to the pistil, then the reproduction happens, and then the seed is formed. This can happen through wind, water, or animals like bees. तो पोलन जो स्टेमन से पिस्टल तक जाएंगे कैसे? हवा के थ्रू, वाटर के थ्रू, और एनिमल्स, लाइक एनिमल्स से स्टिक हो गए, यानी कि बीज. Now let's learn about the life cycle of a plant. First comes seed. The life for new plants starts with a seed. Inside the seed is an embryo
tiny plant. It's a tiny plant called embryo, along with its stored food to help it grow. Then comes germination. When a seed gets the right amount of water, air, and warmth, it starts to germinate. The seed coats break open, and the embryo begins to sprout shoots and the roots. Shoots is the upper part, stem, roots is the lower part. Okay, तो germinate होने लग जाता है. Then comes growth. It starts growing, right? So the plants grow, it develops root to ensure it, and absorb water, and stems to support it, and leaves to make food through photosynthesis. अब जब प्लांट ग्रो और मैच्योर हो चुका है, it will start flowering. Flowering मतलब to produce flowers. The flower contain the reproductive organs needed for making seeds. अब उसी के अंदर ही मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं that will be needed for making seeds. Pollination and fertilization. Pollination हमने पहले पढ़ लिया था. Then pollen from the stamen reaches the pistil. Once the pollen fertilizes the ovule inside the pistil, seeds will begin to form. एंड देन अब सीड भी बन चुका है ना? तो सीड क्या होगा? डिस्पर्स होगा. अब सीड एक जगह तो रह नहीं सकता प्लांट बनने के लिए, तो उसको कहीं और भी जाना होगा. After the seeds develop, they need to spread out to grow into a new plant. Seed can be dispersed by wind, water, or animals, or even by the plant itself. Importance of plant behavior and reproduction. Plant behavior and reproduction are crucial for the survival of plants. They ensure that plants can find the resources they need, protect themselves, and produce the next generation. तो प्लांट्स के लिए वो रिसोर्सेज उनको मिलता रहे, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता रहे, and next generation will produce करता रहे. That's why plant behavior and its reproduction is very important. It not only keeps plant alive but also provides food, oxygen, and shelter for many other living organisms like us on Earth. I hope you understood the concept. Thanks for watching. Like, share, and subscribe for more related contents.